Yes, sir. So, Chandan, which topic have you studied very Sir, properly? I have studied nuclear physics and quantum mechanics. Nuclear physics and quantum mechanics. Quantum, yeah. Okay. So, I think we should start with nuclear physics. And so, Mukaddas sir, Yes, yes. start with nuclear physics, then I will take. Yeah. Okay. Hi, Chandan. Yes, sir. So we'll start with nuclear physics, okay? Yes, sir. Can you please tell me what is the cause of alpha decay? The cause of alpha decay is the positive Q value in the atoms which have a very high N versus Z ratio greater than 1.3. And alpha decay Let me clear on my own. So there is three radioactive decay. One is called alpha decay, and it's yes, called beta decay, and last one is your gamma decay, right? yes, yes, sir. Okay. So can you please tell me what type of parent nuclei will undergoes alpha decay? What is the criteria for that? The nuclei which have very high atomic number. That high atomic number means The atomic number greater than 83. Yes. Very good. What is the mass number for alpha decay? Mass numbers Greater than 150, right? yes. Greater than 150. So now can you understand what is the cause of alpha decay? Parent nuclei is having greater atomic number and mass number large. The meaning Yes, of that? What is the meaning of that? Because of that they have very high positive Q value, and they can when you are telling that mass number is large, it means size is large, right? yes, sir. Because radius of a nucleus is somehow proportional to mass number. You're taking Yes, mass number for alpha decay greater than 150, it means large. Yes. So when the Sir. size of nucleus is large, binding energy per nucleon is low. low. Yes, sir. So binding energy per Yes. nucleon low, it means this basically nucleus is unstable because of large size. Yes, sir. The cause of alpha decay is basically size of parent nucleus is large, and that leads to decrement in the binding energy per nucleon, right? Yes. So this is the cause of alpha decay. Now can you please tell me what is the cause of beta decay? So there are three types of beta decay. One is beta positive and beta negative. When for the beta positive decay, What is the cause of beta decay? So there are three kinds of beta decay. One is beta positive. Summarize. No need to differentiate. Just summarize. What is the cause of beta decay? Okay, sir. When there is a larger number of proton than the neutron, then there is a conversion of proton into neutron with the emission of a positron, which is the cause of beta positive. And in the another case, when a neutron is converted into proton, because of why it is converting? Why it is converting? Neutron is converting to proton. Because there are larger number of neutron than the proton. Exactly. It means basically N by Z ratios not lie in the stable region. There is a stability curve, right? This last question is from Chandan. Can you please tell me what is the difference between beta particle and electron? Beta particles, sir. Actually, there are two kinds of beta particles. So, electron and positron, and they are emitted inside the nucleus. From the inside of the nucleus, and electron, what we call generally electron is revolving around the nucleus and outside the nucleus. Great, very good, very good. So this is from my side. Kunal, you can proceed now. Yeah, Chandan. So my question is, can you please tell that can a free electron stay inside the nucleus? No, sir. Okay, why? So a free electron cannot stay inside. We can explain this from the uncertainty principle, because the energy of
for electron, it is not possible to remain in the region of 1 Fermi. Okay, so can you take 2 or 3 minutes and derive mathematically this thing? Just to show me the means explanation, what are you trying to do? No need to just calculate all the means calculation, no need. Just tell me what you're trying to do mathematically. Okay, sir. According to uncertainty principle, we have del x del p is greater than h greater than equal to h cross by 2, and for the nuclear parameter, we have to take a del of x is equal to 1 Fermi. This goes to 1 Fermi. Okay, it's order of 1 Fermi. Yes, sir. What is delta x according to the nucleus? What is delta x here? Delta x is the dimension of nucleus. What is the dimension? Its diameter. Diameter. Okay. Yes. Go ahead. Go ahead. Then we make calculation for dp. Means delta v. Momentum. Yeah. Yes, sir. And the momentum is m del v. And when we make this calculation, we are going to get Listen, what is the final conclusion you can draw? Means you have find out delta x, okay, its diameter. You have find out delta p. So what is the final conclusion you can make? So then I will get energy, and from that energy I can say that we have never find out any electron which have that much energy. So it is for electron, it is not possible to be inside the nucleus. Okay, good, very good. Okay, my next question is, can you plot y equal to mod x? Well, listen to my question carefully. My question not completed yet. Can you draw y equal to mod x, its first derivative and its second derivative on the same graph? First derivative and its second derivative. Yeah. So this is okay. What is this? It's mod x. Yes, sir. Okay, it's good. Means it's correct, but y equal to mod x can it will be good if you can expand it in the means two terms, like what is from minus infinity to 0 and 0 to infinity. What is basically yes. And it will be it will help you to derive its first derivative and second derivative actually. So can you do that? Yes. No. I just want to say that it's a y is equal to mod x. Okay. Yes, sir. So y equal to mod x, in how many part you can break it? Means there is some range from minus infinity to 0. There will be some value of x. Yes, sir. There will be some value of x. Yes, sir. So if you do right, so what will be the derivative of mod x? You can say. So derivative of mod x will be 1. Will be 1, entirely 1, in a complete region, 1. That is why I want to say that you should write in the two particular way, in the good manner. Okay, sir. Is equal to x for x greater than 0 and minus x for x less than 0. So, Yeah, that's what I want to say. So now tell me, what will be derivative of mod x? Okay, sir. The derivative of mod x will be 1 for x greater than 0 and minus 1 for x less than 0. Okay. Yes. Understood? It's not 1 entirely in the range. Okay. Okay. And now draw its second derivative first. What will be the second derivative? And plot all three things in the same graph.
Okay, sir. The second derivative. X. What will be its second derivative? So, second derivative is 0. Is 0 for x Yes. less than 0 and x greater than 0. Both will be 0. For both. Yes, sir. Okay. Now, just very quickly, yeah, understood. Very quickly, just plot the graph for all these three. The same graph. Okay, this is for mod x and this is for first derivative. What will Yes, be what will be for the second derivative? so second. Anything in the what is the second derivative impact in this graph? So 0. This is a point. Will be simple 0, or is there anything else? No, sir. This will be a straight line. What? And how can it come straight line if it is 0? Actually, the value of y dash double derivative or okay, sir. Y See, dash. Chandan, y Yes. equal to mod x is correct. First Yes, sir. derivative is also correct. You have to think about the second derivative. It's simply 0. For x Yes, less than 0, greater than 0. Okay, because yes, sir. constant term derivative will always 0. Just think about the origin. What will happen on the origin? That's the main question. That's I asked this question. What will happen on the origin? Sorry. Okay. So what will happen on the origin? There will be a Dirac delta function. A little bit of Dirac delta function, because from minus infinity to 0, Yes, there is a minus 1. yes, sir. 0 to infinity is a plus 1. At the Yes, sir. origin, sudden jump from minus 1 to plus 1. Yes. So there will be minus 1 to 0 and then 0 to 1. It will be 2 times the Dirac delta function at the origin. Okay. Yes, sir. So, okay. So later on, let's you should see this graph on the internet or somewhere else. You will get a good appropriate the problem where you're lacking. Okay. Yes, sir. So I guess Atul sir also has joined. Sir. So, hello Chandan. Sir. Hello, sir. Can you tell me about what you have read into electromagnetic theory? Sir, actually, I haven't prepared today electromagnetism. Okay. But okay. So, which topic you have prepared actually? sir, quantum mechanics, nuclear physics. Okay, you have prepared quantum mechanics. Okay. So, just write the matrix form of polyspin matrices. All the component of polyspin matrices. Okay. Yes, sir. Currently, I request Ramesh, you can off your camera. When your turn will come, then you have to go for this. I'm not telling to you, I'm talking to Ramesh Yadav. So just write the all three component of polyspin matrices. Okay, so I think you should give it very fast. Then I have to go. Okay, you have written it. Okay. So what is your SY? Can you please read it because it is not visible to me. What is SY? Sigma Sorry, Y. sigma Y. Basically sigma Y.
So it is 0, iota, iota, 0. 0 and Iota. iota. And what is other than iota? Iota 0. 0, iota, iota 0. Yes, sir. Is that Hermitian matrix? Yes, sir. Look at carefully. If you are writing 0, iota, iota 0, then is that Hermitian matrix? No, sir. No. Okay. Anyway, so you are not very well prepared right now, I think so. Huh? Because it's a very simple thing. This your interview will start from only this question. And then the examiner will ask the next question. Okay. Just tell me, what is the basic condition behind the Hilbert space? That any function belongs to Hilbert space. What Yes, are sir. the basic conditions? And why we need Hilbert space to understand quantum mechanics? So the need of Hilbert space in quantum mechanics is because of the wave function. The wave function we get is a superposition of various wave functions like psi of x is equal to. So there are a lot of things which are going to follow the superposition principle. For example, electric field is going to follow the superposition principle. Wave is going to follow the superposition principle. Yes, sir. So is that all electric field? The expression of electric field belongs to Hilbert space? No, sir. But there is another thing that that two wave functions are not. They are following the condition of orthonormality. Orthonormality is the condition of Hilbert space? I don't exactly remember the condition for. So are you preparing for a PhD interview or integrated PhD interview? Sir, PhD interview. PhD interview. Then you have to talk this thing very carefully. Okay, Chandan. I think you must prepare for next level. Okay, so we should go for next candidate, है ना? Okay. So you are telling that you have to do the just after quantum mechanics में बात करनी, then you have to give the answer. Okay. So prepare, then only come. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, Chandan. Have a good luck. So next candidate is Ramesh Yadav. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Ramesh. So how are you? I am fine, sir. Okay, good. So can you please give your brief introduction about your academic background? Yeah, sir. My name is Ramesh Yadav, and I have done my graduation from DD आपके पीछे University. तुमसे बातचीत हो रही है, उसको पहले शांत कीजिए, है ना? कुछ लोग. Mock interviewer. Yes. My name is Ramesh Yadav. I have done my graduation from DD University, Gorakhpur, and I have secured All India rank 55 in JAM and JEST 104, sir. Okay, very good. So your rank is very nice. Okay, so you are preparing for a integrated PhD, isn't it? Yes, sir. So what is your next target for your research? In which area you want to go? Sir, I'm not sure about because I'm confused about astrophysics and condensed matter physics. Okay, good. Anyway, I want to explore more, sir. Okay. So which area is your favorite area? That which topic you have prepared for interview, that you are very confident into that particular topic? अभी सर एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं. I am just talking about which topic, so that we can start our interview. Yes, sir. Quantum physics and classical. Quantum physics and classical physics. Okay. So EMT, quantum and EMT and classical, sir. Okay, so let's start with EMT. Can you write the 4 Maxwell equation? Yes, sir. Just write the 4 Maxwell equation. Dielectric. No, just in a free space. Just write it first in the free space, then we will go for next level.
सर डिफरेंशियल या इंटीग्रल फॉर्म? Write down integral form. Okay, have you done? Because you are taking Yes, a lot of time. Huh? Okay, can you show me? Okay, it is not visible. So can you read it? Can you read it? Just read Yes, the sir. Ampere's law. What is Ampere's law? Ampere's- So integral b dot dl is equals to mu 0 I plus id displacement current, or id is equals to del phi e by del t. So, okay. So you have, and what is Faraday law in this? Integral e dot dl is equals to minus del phi v by del t. Okay, so can you find the magnetic field of an infinite wire at distance d? Yes, sir. 2 mu 0 I by 2 mu 0 I by 2 pi d infinite wire. Now just change this wire to a cable. Okay. Yes. Yes, And sir. that cable has an internal radius r1. Yes, sir. Okay. And after then you have to find the magnetic field at some distance greater than r1. Yes, sir. Okay. So can you plot the magnetic field versus r? Yes, sir. Okay. सर इंटरनल तो लीनियर रहेगा, उसके बाद डीके करेगा 1 by r. इंटरनल क्या आएगा? हाँ, बताओ बताओ. गुड. लीनियर सर, प्रोपोर्शनल टू आर होगा. Linear, इंटरनल increasing or decreasing? इंक्रीजिंग सर. Increasing. Very good. And after उसके that? बाद 1 by r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा. प्रोपोर्शनल होगा 1 by r के या 1 by r square के? नहीं सर, 1 by r. Okay, can you derive it? Internal वाला आप derive कर सकते हो? Yes sir. Okay. No need to derive. Okay. Okay, this is from my side. I think next people can go for this. Okay, so Alok sir, I also joined. So I would like to call Alok sir. Alok sir, please. Hello. Am I audible? Yes, Good sir. afternoon sir. Good afternoon. रमेश ये बताओ कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मेटल के थ्रू जाता है, Yes sir. तो उसका तुम फिजिक्स डिस्कस कर सकते हो? कंडक्टर से सर. हाँ, कंडक्टर inside the conductor or incident on the conductor. Suppose electromagnetic wave is propagating inside The conductor. a conductor. Yes sir. Then sir, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में डिस्कस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक में डिस्कस करते हैं, yes. वैसे मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड से जो होता है सर एडवांस करता है. मतलब वो कैसे ये चीजें कैसे हम डीके करता रहता है सर. कैसे मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं? जैसे मान लो वैक्यूम में डिस्कशन करना होता है तो क्या करते हैं? वैक्यूम में सर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है प्रोपगेशन वेक्टर के. कैसे आता है ये? सर मैक्सवेल इक्वेशन से. कैसे बताओ? ऐसे बताओ, मैं सुन रहा हूँ, लिखने की जरूरत है. मान लो
वैक्यूम में सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें डिस्कस करना है, तो हम कैसे इक्वेशंस निकालेंगे जिसके थ्रू हमें पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रोफाइल कैसी होगी, दोनों में फेज क्या होगा वैक्यूम में? तो मैक्सवेल इक्वेशन से डिराइव होगा। डाइवर्जेंस जो होता है ई का, वैक्यूम में देखेंगे तो रो बाई एप्सिलॉन होता है, हम्म और मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो 0 के इक्वल होता है। हम्म तो तो उससे यहाँ क्या से है, सर ये कैसे प्रूव करोगे कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करेगा वैक्यूम में? सर थर्ड वाली इक्वेशन को, वो उसके क्या नाम है, वेव जो इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करेंगे सर। पहले उसका डबल डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस लेंगे? नहीं सर कर लेंगे, लास्ट वाली इक्वेशन होता है एम्पियर्स इक्वेशन का, कर लेंगे। उसके बाद जो डबल डेरिवेटिव होता है डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, इससे जब कंपेयर करेंगे तो वी जो होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 वैक्यूम के लिए आता है सर। और म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू रखते हैं तो 3 × 10⁸ आता है जो तो वेलोसिटी ऑफ इससे लाइट। इससे ये कैसे पता चलेगा कि फील्ड की प्रोफाइल कैसी होती है? द प्रोफाइल क्या सर? प्रोफाइल क्या होता है, फील्ड कैसी होगी, कैसी दिखेगी, किस फंक्शन से रिप्रेजेंट करी जाएगी? फील्ड सर फंक्शन जो होगा वो टाइम और स्पेस दोनों के साथ वेरिएशन होगा उसका। वो तो क्या एफ कॉमा टी लिख दोगे कि ई विल बी फंक्शन ऑफ आर कॉमा टी, या उसका कोई नेचर लिखोगे? प्रोफाइल को तुम क्या बोलते हो? मतलब उसका एग्जैक्ट जो होता है वेरिएशन कैसे है, जैसे कर्व ड्रॉ करते हैं। तो वो तो किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट होगा, या उसी सर, को उसकी प्रोफाइल बोलते हैं। या सर का वो साइनसॉइडल फंक्शन होगा सर, तो वो या कैसे पीरियोडिक कैसे फंक्शन। कैसे निकलेगा? सर वो जब वहाँ जो इक्वेशन लिखते हैं तो एसएसएम के टाइप का इक्वेशन आता है। एसएचएम? नहीं सर, वेव इक्वेशन टाइप में आता है, वहाँ हम्म टाइम भी होता है, तो वहाँ से जब डेराइव करते हैं तो कोसाइन कैसे फंक्शन डिराइव होता है। कैसे डिराइव करते हैं? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है। और ऐसे ही जब मेटल में जाएगा तब क्या होगा? मेटल में सर उसमें जो होता है स्लो हो जाता है। यार तुम ये बताओ, ये मैं अप्रोच पूछ रहा हूँ, कैसे उसको डिराइव करोगे? जो हो जाता है वो तो रिजल्ट है ना, बट उस यस सर, रिजल्ट तक पहुंचोगे कैसे? तो थर्ड वाली इक्वेशन एम्पियर्स इक्वेशन जो होता है उसका यूज करते हैं। क्या डिफरेंस और आएगा वैक्यूम में और मेटल में? मेटल में जो होता है उसका जो वेव क्या प्रोफाइल होता है वो डिफरेंस आएगा मैथमेटिकल फॉर्म में? मैथमेटिकल फॉर्म सर, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर -2, मतलब डिकेइंग टाइप में। जब तुम डेरिवेशन करोगे तो जो तुमने वैक्यूम में किया और जो मेटल में किया, उन दोनों में क्या फर्क आएगा? सर वहां जो होता है सिग्मा जो होता है ध्यान से नहीं वैक्यूम। देखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम वैक्यूम में, मेटल में और डाई इलेक्ट्रिक में जब वेव प्रोपोगेशन होता है तो कैसे पूरी चीजें डिराइव होती होती हैं, उसको एक एक लाइन हाथ से करके देखो। एग्जैक्टली वो पूरा डेरिवेशन कैसे होता है, उसकी कहानी तो चलो वो तो रिजल्ट है, बट द प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पूरा प्रोसीजर करते कैसे हैं। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जो वैक्यूम में प्रोफाइल लिखते हैं साइनोसॉइडल, सीइंग दैट कि वो वेव इक्वेशन इन वैक्यूम है, क्लासिकल वेव इक्वेशन से मैच करता है, यस सर। ठीक है। लेकिन जब वही चीज मेटल में लिखेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? सर जैसे वहाँ मान लो, एक्सपोनेंस, एक एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाता है सर। तो वही तो बात है कि वो कैसे आता है। मान लो तुमने वैक्यूम में पूछा, कहा कि ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप का होगा, मान लो तुमने ऐसा बोल दिया, तो मेटल में क्या कहोगे? फ्रीज हो गया क्या? Ramesh, your internet connection is creating some issue. हम्म हाँ, चलो कोई नहीं, थोड़ा ये पढ़ेंगे, जब ये आएंगे वापस तो बता दिया जाएगा इनको। नेक्स्ट खोलो। हाँ, okay. So let's start with
Next candidate is Akanksha Agrawal. Akanksha? Yes, sir. Okay, can you on your video? Yes, sir. Okay. So, yeah, please take it stable. आवाज आ रही है क्या? हाँ सर. Akanksha, just give your brief introduction about your post-graduation and then your brief introduction. Okay, sir. Good afternoon, sir. Myself Akanksha Agrawal, and I have done my MSc from Central University of Rajasthan, and I have done my BSc from SK Government Girls College, Sikar, and I secured All India rank 492 in GATE exam, and now I am giving PhD interviews for You have also research, qualified pursuing JEST? careers. No, sir, I did not give Okay. JEST exam. And from where you got call letter for interview? Sir, I got from IIT-Kharagpur and IISc Bangalore. Okay. Okay. And sir, bar BRC, I also qualified BRC written exam. So Okay. 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 BRC Very good. interviews. Okay. Okay. So Akanksha, can you tell me Maxwell's equations in differential form? Ramesh, we will talk you after some time. Okay. Okay, sir. Suggestion for you is that जो important चीजें हैं उसका फर्स्ट हैंड डेरिवेशन अच्छे से करो, उससे तुम्हें फीलिंग आएगी कि उसको एक्चुअली निकाला कैसे गया, ताकि जब डिटेल में बात हो एट लेंथ तो वो कमी ना रह जाए कि तुमने बस खाली फाइनल एक्सप्रेशंस याद कर लिए. ओके, जितनी भी चीजें जिस पे बात होती है, चाहे वो क्वांटम हो, ईएमटी हो, सॉलिड हो, उसमें थोड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लो डेरिवेशन का, क्योंकि अभी वो टाइम तुम्हारा निकल गया, तुमने ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई कर लिया, बट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वाला बंदा नहीं दिखना चाहिए. ठीक है, कि बस खाली टिक लगाने वाला है. समझ रहे हो बात को या नहीं? उस डिफरेंस को दूर करना है. ओके, ठीक है. हाँ, कंटिन्यू आकांक्षा. Tell me, just you don't have to write. You can tell me. Del dot E equal to rho upon epsilon naught, del dot B equal to 0, and del cross E equal to minus del B by del T, and del cross B equal to mu naught J plus mu naught epsilon naught del E by del T. Mu naught J plus mu naught epsilon naught del E by del T. Huh? Yes, Okay. sir. Suppose the divergence of magnetic field was not zero, because seeing the Maxwell's equation, it looks little injustice to this equation, because divergence of E is there in terms of rho by epsilon naught, but divergence of B is not there. So suppose the magnetic charge would have existed, then how this equation will be modified and how other equations will be modified? Sir, for charge free space, we do del dot E equal to also 0. No, like del dot E is equal to rho by epsilon naught, है ना? Yes, sir. क्योंकि there is a charge density. Yes. Right? अगर suppose कोई magnetic charge exist करता, मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट मान लो एग्जिस्ट करते, तो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होती और बाकी इक्वेशंस कैसे मॉडिफाई हो जाती? Just you don't have to write, you can tell me if you have some idea. Sir, What if like, divergence of B was not zero? So how the Maxwell's equation will look like? That is my question. sir, if divergence of B is not equal to 0, then what it will be? What will be the form? then Del dot B is equal to.
del dot B equal to. So Del I dot think B. Like there is a charge density, so I think there is current density. Well, like I don't know. Del dot B is not equal to 0. Okay, then no problem. Think about it later. What is refractive index So refractive index is N, in metals? and so like exact refractive index is root. We write it equal to root epsilon r, and in metals Why alpha why plus why not root epsilon or mu r? so we take mu r equal to 1. Why? So for vacuum, I think. No, for You are air. saying you are in maybe. metal? Oh, okay, so there is mu r. Mu r. Why Under root why of mu mu r. r? So please, this is for everybody, that whenever you say something, suppose you have done a preparation, you have done something, you know it, that becomes unimportant during interviews, because they are not interested in listening objective type results, because either you are going to do post graduation or research with them, so they are going to introduce you to the research papers where things are done at length, some research problem is handled. So their expectation is not the objective type things which you have learned. So that's why my suggestion, strong suggestion to everyone is, select 5-7 topics initially and get involved yourself into thorough derivation. That will teach you a lot. Once you derive anything, you get to understand if you are doing it from good books. They do approximations, they quote approximations, why they have done this, why they have taken this term, why they have neglected this term. Those things are very, very important in research. Okay? Okay, sir. Can you tell about some, like you have some samples, like Kunal sir posted something which he has done in his project. So how those samples are analyzed? Can we see with naked eyes, or there are some techniques to see those small scale So things? which sample? Which sample? Like suppose Metal sample. sir has posted some cylindrical, nano wires in the group. So how we see such things? What are the techniques involved in this? So please repeat. I don't understand the question. कुणाल सर थोड़ा बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Akanksha, you must have studied about let's begin with initially very means basic XRD. Have you studied XRD? X-ray diffraction. Yes, I studied. Okay, so the question of Alok sir is basically, what is the use of XRD? Why it is so important in our research area? Why it is so important? Sir, At plus place, I wanted to know what are the techniques, what are the few techniques using which you can analyze your samples. That was my initial question. Just name of those techniques first. See, Akanksha, if you have studied, if you have read the today's message of Alok sir in the group, you will able to answer this. Yeah, go ahead. Okay, sir, I understand. So, sir, like for material characterization, are you asking about that? Yeah, so I was not taking directly the name from where the material characterization things come, because you want to see some very, very small scale things. That is what we mean by characterization, because you can't judge those things by naked eyes, right? So what are the techniques? Yes, sir. So like we use a microscope
and then we use diffraction methods like X-ray diffraction, neutron diffraction. What is difference to, between X-ray diffraction and neutron diffraction? Sir, in X-ray diffraction we use X-ray. We target on the material. X-ray wave X-ray targeted on the material, or let's say crystal. We target X-ray on the crystal, and in neutron diffraction we target neutron beam on the material or sample. Which And have then we get diffraction pattern, longer wavelength? like longer wavelength neutron. Okay. And which one will be more sensitive? X-ray. Why X-ray diffraction is so popular? Sir, because like we know that X-ray has the wavelength order approx 1 angstrom, and that plane spacing between the crystal is also equal to angstrom. So we got diffraction pattern, and we can calculate the size and crystal lattice constant, and also the structure of the material. Okay. Okay. Like what is the structure, and what are the diffraction planes, and what is the lattice constant, or from which we can think about the properties of the material also. Okay. ठीक है सर, पूछिए कुणाल. Okay. Yeah, Akanksha. I guess Mukaddas sir is also there. Sir? Yes. Yes, please. So, Akanksha, can you please tell me what is the band gap of silicon bulk material? Band gap of silicon bulk. Silicon bulk material is 1 electron volt. No, it's around 1.1, right? Now, my question is not that. Now, if you suppose you have bulk silicon, now you are making quantum dot of silicon. So, what will happen to band gap? Will it increase or decrease? So, you have a bulk silicon having band gap around 1.1 electron volt. Now, if you are making that quantum dot of silicon, what will happen to band gap? Quantum dot of silicon. So we go from bulk to like quantum dot, and it means that very low scale. So the band gap is. So you know there's a concept called decrease. Decrease. You know there's a concept of quantum confinement, that E proportional to 1 by L square, where L is the dimension. So when you're going to quantum dot, it means your dimension is reducing, right? The band gap will be increased. So now band gap is increased. Okay, now what will happen to resistivity? Will it increase or decrease? Band gap is increased and resistivity is also increased. Why? How? Like What is the nature? What is the nature? How that band gap and resistivity is related in semiconducting material? Rho equal to rho naught e to the power minus Eg upon kT. So minus Eg, and it n means equal to n. That's fine, but it means minus Eg, it means it decreasing, right? Eg is increasing, so rho is decreasing, right? Oh, yes, sir. Yes, sir. No, there's a proportional relation. You know, I mean, there's an exponential Eg by kT. If you see the conductivity, in conductivity, there's a minus. That's obvious, right? If you have band gap large, then resistivity will be large because resistance will be large, right? Now, suppose you have Sir, I imagined physically, like if band gap is more, then electron do not go from valence band to conduction band, so the resistivity will be increased. Exactly. But you have that mathematical form that you have wrongly mentioned.
Okay. Now suppose you have an electromagnetic wave that is traveling from free space to some medium. So how that wavelength of this EM wave will be changed? Your EM wave is traveling from free space. Now it is going to some medium having refractive index n. So now that how the wavelength of this EM wave is getting changed when it's going to inside material. Okay, so sir, in the medium, From free space is going. velocity, Will it increase or decrease? so the refractive index of the medium is high, more space. So the Refractive index of medium, yeah, it's greater than on is. wavelength will decrease. Wavelength will be decreased. Yes, yes. Good. Now, can you please describe that Hall effect a bit? Yes, sir. In the Hall effect, we take a wire in which the current flowing. We can assume that current flowing in the x direction, and we apply an magnetic field in the z direction. Then, in the perpendicular direction, like along the edges of the wire, a new voltage will generate, and we call that voltage is voltage. What is the cause of And creating this is inducing voltage here? because due to like current is flowing in the wire, that means charges flowing in the wire. So there is a force, magnetic force, which is equal to q v cross b. So What is the name of this force? What's the name of this force? Lorentz force. Lorentz. Exactly. Yeah. Okay. Lorentz force. So due to Lorentz force, the like plus charge will go on the one corner and minus charge will go on the one side. So they generate a whole force. Okay. So why? How's the? I understood. Now, what is the reason behind that experiment? What's the goal? Repeat, please repeat. The whole experiment performs. What's the goal behind that experiment? What's the reason? You are doing experiment because some reason, right? Oh. Yes, sir. Because we want to find out the mobility and also the which type of charge is carrying in like majority charge carriers. So the coefficient from which we can calculate the majority charge carrier like electron, and we can also calculate mobility and Okay. So now last question. Can you please identify the statement that magnetic field is a true vector? Whether the statement is correct or wrong. That magnetic field is a true vector. true magnetic field is true vector. It is correct or not? Correct only. So there's a two type of vectors. One is called true vector and this is called axial vector. So what type of magnetic field किस कैटेगरी में है? ट्रू वेक्टर और एक्सियल वेक्टर पे? Magnetic field, angular momentum, all these are actually axial vector because under parity they will not change its sign. Yes. Well, all the best. This is Magnetic from field my is So this is from my side. All the best. Okay. Yeah, Kanksha. Have you studied solid state physics? Am I audible? Voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Audible. So, have you studied solid state physics? Yes, sir. Okay. So, means you definitely have studied superconductivity, right? Yes, a little bit. Okay. So, can you tell me something about London penetration depth? What is it? London penetration.
Sir, if we apply magnetic field on say, superconducting, sir, I don't know actually. I can Okay. Can you tell something about Meissner effect? sir, we apply magnetic on a superconducting that not inside from outside, like material behaves like a diamagnetic material, perfect material. Okay. Okay, Like Akanksha. inside there is no substance of material. Okay, I think there's so much time is there, and Let's yeah, move to next candidate. yeah. So Akanksha, sir, Alok sir, any feedback for her? Actually, everything is okay. The same suggestion I would like to give that just try to do at least 10 derivations. That will boost your confidence. Okay. And that will help you. Are you listening, Akanksha? I think there's some internet connection. Yes, sir, yes, sir. So that will help you to Yes, connect sir. things also. That will help you to connect things also, right? Because once you go through a books for important topics, the you start reading between the lines, because otherwise what happens that we are only in short notes and objectives. So during interviews we have to totally come out of that. Like you have seen how Mukaddar sir was asking questions connecting different things, so you will be only able to answer once you have gone through the original text. Read it from good books always. Okay, Akanksha? Okay, sir. Okay, so just Okay. write down 10 topics, do the derivations, read it from the books. Okay. Okay. Next. Yeah. Next candidate is Kushagra. Kushagra Srivastava, please, on your video. Good afternoon, sir. Good afternoon. Your video is not accessible, I guess. अच्छा अब देख रहे हैं. Yeah. Hi, Kushagra. Good Hello. afternoon, sir. Good afternoon. So just give us your brief introduction, then we'll start. My name is Tushar Shrivastava. I have done MSc from DDU Gorakhpur University. My specialization in MSc was solid state physics. I have cleared GATE examination, JEST examination, and BARC scientific officer written examination. Okay. So what was your project in MSc? सर हमारी यूनिवर्सिटी में सर एमएससी में प्रैक्टिकल्स होते थे और कोर्स वर्क होते थे, प्रोजेक्ट नहीं था. लास्ट सेम में प्रोजेक्ट नहीं था आपका? यस सर. कहाँ से है आप? सर डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी. गोरखपुर यूनिवर्सिटी से. ठीक है. ओके. तो कोई फाइनल सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट या कोई छोटा मोटा कोई लिटरेचर सर्वे वगैरह कुछ भी कुछ ना नहीं? कुछ तो हुआ होगा. नो सर. अच्छा. ओके. कोई स्पेशल पेपर भी पढ़ा है कोई? यस सर. सर मैंने यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद काम स्टार्ट किया था नैनो पार्टिकल फिजिक्स और उनके पॉलीमर कंपोजिट पे, फेराइट नैनो पार्टिकल्स, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया. मैंने कैरेक्टराइजेशन नहीं हो पाया, वो बन चुका, सिंथेसिस हो चुका था, कैरेक्टराइजेशन नहीं हो पाया उसका. आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे लगते हैं फिजिक्स में? नहीं, आपने भी कहा कि आपने एमएससी कंप्लीट होने के बाद आपने ये सब किया, राइट? यस अगर मैं सर. सही हूँ तो यस फिर सर. उसका कैरेक्टराइजेशन आप कैसे करना चाहते थे? मतलब क्या सोर्सेज थे आपके पास का कैरेक्टराइजेशन करने के लिए? आपने कहा कैरेक्टराइजेशन नहीं हो पाया, तो आप कुछ सैंपल बाहर भेजना था लेकिन अभी तक जा नहीं पाया. ओके. सो हमेशा टफ रहता है. अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आप सैंपल मतलब कहाँ भेजना चाहते थे? थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. मींस आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे उसका? सर यस सर, बट डीडी कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर सर के अंडर में प्रोजेक्ट ज्वाइन किए थे. ओके. तो अभी भी चल ही रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया. अच्छा. और इस बीच नेट के प्रिपरेशन के लिए फिर हम उसको छोड़ दिए थे. ओके. तो आपने क्या क्वालिफाई किया? अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए उस बारे में. सर जेस्ट एग्जामिनेशन 145 रैंक से, बार्क साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन, एंड सर गेट एग्जामिनेशन
892 रैंक। तो अभी आपका कहाँ से लेटर आया हुआ है? सर IIT BHU से मटेरियल साइंस के लिए, सर ISC बेंगलोर से, IIT दिल्ली से, आईसर मोहाली से, और ठीक है। सर इंस्पायर फेलोशिप के बेसिस पे। अच्छा, तो आपका कोई विशेष कोई रुचि है किसी सब्जेक्ट में? सर कंडेंस मैटर फिजिक्स में। अच्छा, और एक आधा और टॉपिक? सर क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, तो कंडेंस मैटर सर पूछेंगे कुणाल सर। ओके, कुशाग्र, कंडेंस मैटर आपने बोला, कंडेंस मैटर में आपका इंटरेस्ट है। कंडेंस मैटर फिजिक्स में आपने टॉपिक पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट का, राइट? यस सर। तो क्या मुझे बता सकते हो कि कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो स्पेसिफिक हीट के बारे में ही हैं, एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर? सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट थ्योरी? व्हाट आर दोस? सर प्लीज। क्लासिकल थ्योरी सबसे पहले आई थी ड्यूलॉन्ग पेटिट की, तो उसमें हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लेके चले थे हम लोग, बट क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर तो उसका CV की वैल्यू कांस्टेंट आती थी 3 ओके। kBt, बट एक्सपेरिमेंटली सर एट हाई टेम्परेचर 3 kBt हो सकता है वैल्यू, लेकिन एट लो टेम्परेचर इट्स प्रोपोर्शनल टू सर TQ। ये आपको कैसे पता चला कि एट लो टेम्परेचर टी क्यूब हो? सर एक्सपेरिमेंटली आया था, एक्सपेरिमेंटली उसको आया? वेरीफाई कर रहे थे। ओके। फिर सर आइंस्टीन थ्योरी आई, वो क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लेके चले थे, और एवरेज एनर्जी क्वांटम नहीं, हार्मोनिक एक ऑक्सीलेटर। मिनट, एक मिनट। डुलोंग पेटिट लॉ पे अगर हम बात करें तो आपने बोला कि उसका 3R अगर निकालें, 3 kBt यानी 3 kB यस सर। कांस्टेंट आया। तो इससे क्या यस सर। मतलब, आप क्या, इससे क्या पता चला, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर कि 3 kB आया तो यहाँ पे प्रॉब्लम इशू हो गया? थोड़ा सा एलेबरेट कर दीजिए इस चीज को। यस सर। सर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग सर इक्विपार्टीशन थ्योरम से हाफ KBT करके सर एनर्जी को डेरिवेट करके CV की वैल्यू निकाला गया था, तो 3 KBT आया नहीं, था। 3 kB आ गया, वो समझ गया। आपने स्पेसिफिक हीट निकाला तो वो 3 kB आ गया, यानी 3R आ गया। यस सर। इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा एलेबरेट कर दीजिए, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई फिर? ओके सर। सर एट हाई टेम्परेचर तो क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ अप्रोच करता है, तो एट हाई टेम्परेचर तो ये सही था, बट एट लो टेम्परेचर इट डजंट फॉलो द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ओके, सो व्हाट वाज द नेक्स्ट थ्योरी? तो आइंस्टीन थ्योरी। ओके, थोड़ा थोड़ा बताइए जल्दी से उसको, ओके दोनों के बारे में। ओके सर। सर आइंस्टीन थ्योरी सर क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लेके चले थे, तो जिससे क्वांटम कि हार्मोनिक ऑसिलेटर तो वो भी लेके चले थे, डुलोंग पेटिट। नो सर, सर वो क्लासिकली लेके चले थे, वो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी वाला क्वांटम तो हार्मोनिक। वेरी इसमें गुड। डिस्क्रीट एनर्जी लेके क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर लेके चले थे, लेकिन इसमें भी एट हाई टेम्परेचर तो 3R आता था, लेकिन एट लो टेम्परेचर सर एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी आते थे उसमें, तो ये भी एट लो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल नहीं था। सर ओके। इसके बाद एक और थ्योरी आई थी, सर डिबाई थ्योरी। सर डिबाई थ्योरी में सर T³/θ, T/θ का θ³ के प्रोपोर्शनल तो आ गया था, तो इसमें हम लोग क्वांटम हार्मोनिक से ऑक्सीलेटर लेके ही चले थे, लेकिन कपल्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, तो इस वजह से मीन्स हम ये बहुत कह सारे। सकते हैं डिवाई थ्योरी में हमने कंज्यूम किया कि हम एक मीन्स कलेक्टिव मॉडल लेके चल रहे हैं, कलेक्टिव यस सर। ऑसिलेशन लेके चल रहे हैं, राइट? यस सर। यस सर। तो ओके। इससे तो डी बाई थ्योरी जो वो क्लासिकल है या क्वांटम है? सर क्वांटम थ्योरी है सर। डिस्क्रीट एनर्जी लेके चले थे, लेकिन बहुत सारे कपलिंग की वजह से वो एनर्जी लगभग कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, बहुत सारे। ओके, हाँ। कुशाग्र, क्या आप मुझे कूपर पेयर्स के बारे में कुछ बता सकते हो? यस सर। क्या होता है सर ये? कूपर पेयर सब, जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो इनिशियली रिपल्सन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आयन एंड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक आयन के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, तो इस इंटरेक्शन से सर कूपर पेयर बनता है, जो बोसोनिक होता है।
वो जो कि क्या होता है, बोसोनिक होता है। अच्छा, मुझे हो सकता है sir. याद ना आ रहा हो सही से, बट मुझे लग रहा है डीबाई थ्योरी क्लासिकल मॉडल है, क्लासिकल थ्योरी। नहीं सर, इट कम्स अंडर द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके। एक्चुअली क्या हुआ था, डिलोंग पेटिट ने सर इनिशियली दिया था क्लासिकल, थोड़ा इश्यू हो गया था, वो क्लासिकल ऑसिलेटर लेके चल रहे थे। फिर आइंस्टीन और डिबाई ने दोनों ने अपने अपनी थ्योरी दी, जिससे डिबाई थ्योरी बहुत ज्यादा फीजिबल थी, तो उनको क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक। ओके, अच्छा अभी आपने कहा कि जो कूपर पेयर है, Yes sir. ठीक है, वो किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। Yes sir. दो इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्शन करते हैं। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि जो कूपर पेयर है वो बोसॉन से, ये कैसे हो गया? सर स्पिन हाफ जोड़ के सर इंटीग्रल स्पिन देते हैं। इंटीग्रल स्पिन देते हैं, मतलब स्पिन का इश्यू है। यस सर। ओके गुड। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, फिर एंड है मेरे साइड से। मैं आपको एक प्लेन दे रहा हूँ 2 2 2। 2 ओके, 2 2। यस सर। सो क्या मुझे बता सकते हो कि डायमंड क्यूबिक लैटिस की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? सर डायमंड क्यूबिक और सर स्ट्रक्चर फैक्टर तो एफसीसी आपने पढ़ा लेटेस्ट है। होगा। यस सर। हाँ। ओ डायमंड क्यूबिक। यस सर। हम्म, सर ऑल इवन है एंड 4n+2 है, तो सर नहीं एब्सेंट होगा सर। 4n उसमें रहता है तब होता है क्या सर। 400 रहता H+K है? प्लस एल सर। H+K+L अगर 4n होता है, n जहाँ पे कोई भी इंटीजर है, 4 8 12 ऐसे रहता है, तो ये डायमंड क्यूबिक होता है। लेकिन सर 2+2+2 6 होता है, तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है, जिससे ये डायमंड क्यूबिक नहीं होगा। ओके, आलोक सर प्लीज। हाँ ठीक है। मुकद्दर सर, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। Yes. If you remember that in quantum harmonic oscillator, that energy is half h cross omega. It's not zero. Classically, it can be zero, right? यस सर। Energy of oscillator classically can be zero, but quantum mechanically it should be non-zero, and that is half h cross omega in only, right? यस So, सर। can you please tell me what is the reason behind that? सर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो सर हाफ एच न्यू होता है, क्योंकि एनर्जी जीरो हो गई नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम पीरियड फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। Basically, because of Heisenberg uncertainty principle. यस सर। Okay. Okay. Now you have suppose you have a particle in a box, and you see that wave Yes, function is like wave function is like √2 by a sin n pi x by a, right? यस सर। But n can take values 1 2 3 and all integer, but it cannot take n equals to 0. What is the reason behind that? सर इफ n इक्वल टू 0, तो सर पार्टिकल इस बॉक्स में होगा ही नहीं। वेव फंक्शन 0 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, तो इस Yes, वजह yes, से। yes. Great, very good, very good. Now, can you please tell me that in a superconductor, that conductivity is infinity, right? Conductivity is infinity in superconductor, यस सर। right? What's the reason behind that? Can you यस please सर। explain that mechanism, why the conductivity becomes infinity in superconducting state? यस सर। सर लेनन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, लेनन इक्वेशन के अकॉर्डिंग What will सर happen to, I mean, at low temperature, what will happen to lattice vibration? Will that ओके सर। ions will vibrate? सर नो सर, एट लो टेम्परेचर It सर will वाइब्रेशन not be शुरू हो vibrate. जाएगी। So when it will not be vibrate, then that your carrier sir. can easily flow. There will be no resistance because your ions at Yes, stop. sir. No, it's not vibrating. It's not opposing that carrier flow. Yes sir. Now, last question is: can you please differentiate that hard and soft superconductor? You have a hard Okay, sir. superconductor and soft superconductor. सर हार्ड सुपर कंडक्टर मेसनर इफेक्ट को पूरी तरीके से फॉलो करता है। ससेप्टिबिलिटी -1 होता है, Why it is called hard? Why it is called hard superconductor? सर ये आई डोंट नो सर। Okay, can you please tell me which one is more usable? You have a soft superconductor and hard superconductor.
सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कौन सा ज्यादा यूज करोगे आप, सॉफ्ट और हार्ड? सर सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। सॉफ्ट सुपर कंडक्टर यूज करोगे? नो नो नो, you have to use hard superconductor. It's more practical application of hard superconductor is more. You have a concept of critical magnetic field, you know that superconducting state is depends upon magnetic field. Yes sir. To destroy that superconductivity you need more magnetic field for hard superconductor. Yes sir. So called type 2, right? Yes sir. तो हार्ड जो हार्ड सुपरकंडक्टर है ये ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. Okay sir. ओके ओके, ऑल द बेस्ट. हाँ, Thank you sir. Okay, Kushagra, your knowledge is up to mark, and there's always some means area to improve. Okay. Yes sir. And Alok sir, any feedback? No, see, you tell. Good. So just go ahead with a little concept. Okay, means see you have you are also qualified BARC, as you said. Yes sir. Yes Okay. sir. So means you have to give your interview in the BARC also within a month or so. Yes sir. And okay, so all these interview will be basis on your main fundamental concept. Okay, means Yes, sir. whatever. See, in the IIT interview or something, they can give you some option to tell your favorite subject, but I think BARC interviewer will not give you any option. They will ask from anywhere else. Sometimes So, they say also, but yeah. the thing is that detailed, like I was talking to a student, and she told me that like they have told her to come on the board Yeah, and yeah. discuss from the scratch hydrogen Uh-huh. atom problem in quantum mechanics, starting from the Got Hamiltonian and then Schrodinger equation, then variable. I mean, And it takes around 45 minutes to discuss only those so, part. yeah. So sometimes if they feel that okay, you are able to do, then they can switch to other top. I mean, just you should know things from the basic and complete. Yes sir. You should read from the books, not just the results, but the method also which you have employed. Okay. Yes sir. Yeah. Okay, Kushagra, Sir. all the best. Yeah. सर नेट का एग्जाम अभी हमसे क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो हाँ. हम नेट पे फोकस करना चाहते थे, लेकिन ये इंटरव्यूज के डेट्स मतलब बीच में ही हैं और इससे टाइम नहीं मिल पा रहा है उसके लिए, तो प्रायोरिटी किसको देना नहीं, अभी चाहिए? तो जहाँ सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू में, तो इसकी प्रायोरिटी को आप कम नहीं कर सकते. ठीक है. Yes, sir. हालांकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बात ये है कि आप जिस चीज में आपके पास कॉल आ गया है, Yes, sir. तो उसको तो अच्छे से पकड़ना है ही. ठीक है. थोड़ा सा टाइम मैनेज Yes, sir. करने की कोशिश करो, क्योंकि फुल टाइम तुम ऐसे छोड़ दोगे कि हम इंटरव्यू तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा भी क्या तैयार कर रहे हो. ठीक है. Yes, sir. तो जस्ट डिसाइड करो कि यार कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें बुक से पढ़ने, और बाकी अपना कंटिन्यू रखो. वो भी पढ़ाई इसमें हेल्प करेगी, ऐसा थोड़ा हेल्प नहीं करेगी भाई. नेट में जब तुम Yes, इतने sir. सारे टॉपिक्स के थ्रू जाते हो, उन्हीं में से कुछ Yes, sir. टॉपिक्स को यहाँ डिटेल्ड में बुक से पढ़ो. ओके. Yes, sir. अच्छा, हाँ. नेट क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए? क्योंकि फंडिंग है, जैसे JRF है. ठीक है. हाँ. इसका बहुत Yes, बड़ा sir. इशू हो जाता है कि अगर आपके पास अगर फंडिंग आप नहीं है तो फिर कहीं भी जाते हो तो आपके पास अपना पैसा आप जेब में लेके जा रहे हो, तो फिर JRF Yes, sir. आपको गवर्नमेंट अलग देगी लेवल पैसा. पे हो जाता है. और आप जा रहे हो कि भाई आप एलिजिबल हो, लेकिन भाई पैसे की व्यवस्था आप करो, तो दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती है. ठीक है. Yes, कोई sir. नहीं कुशाग्र, बट मुझे नहीं बराबर लगता बराबर. कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली है. मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल. बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि तुम फिलॉसफी और हिस्ट्री अलग अलग, मतलब आई मीन वही फिजिक्स वहां भी पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है. वहां पे थोड़ा अलग फ्लो होता है. तो उन्हीं के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पे हम लोग इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, उनको किताबों से पढ़ो. रीड फ्रॉम द Okay, बुक. sir. ओके. Okay, sir. Okay, Kushagra, good luck. कौन Thank you, बचा? sir. So next candidate is Prajwal. प्रज्वल. ओके. Yes, sir. Yeah, Prajwal, please on your. Yeah, hi Prajwal. Yes, good afternoon, sir. Good afternoon. Just start your introduction.
Sir, my name is Pravegaa. I have completed my graduation from IIT-JAM University and post-graduation from University of Delhi. Have you qualified? What exam have you qualified Sir, right now? GATE and JEST. With rank? What were your ranks? Sir, GATE 304 and JEST 683. Okay. And from where you got your call letter? Which? Sir, IIT Roorkee, PRL Ahmedabad, IIT Kanpur, IISER Mohali. Okay. So, you have decided which will be your area of research? Any particular research area in which you are interested? Sir, broadly, sir, there is no particular field I have decided, but broadly I can say high energy and astroparticle physics. Then you have decided a lot. Sir, but also I have another field open. This is complex systems. Okay. So high energy physics, you are interested. So I would ask Mugaddar sir to ask few questions from there. Okay. Thank you, sir. Prajal, can you please describe the time scale of fundamental interaction? So time scale of fundamental interaction. So for a strong interaction, it is 10 to the power minus 23. No. I'm not asking any data. So Can you describe what is time scale? So time scale of fundamental interactions. What is, not the number? Sir, I actually don't get the question. I don't get questions. A very good question actually. Whatever you know. Whatever you know. What is time scale actually? There's a range, right? You know that range. How the range is related? So range is related inversely proportional to mass. Yes, that's perfectly fine. Now, can you please tell me what is time scale? How it is related? So time scale with mass. No, which parameter decide the time scale? You have a mass of exchange particle that decide that range, right? Yes. Inversely proportional to mass is the range, right? Yes. Now, which parameter basically decide the time scale? The decay width. You have a decay width. Suppose a particle cross upon T. Okay. Inversely proportional to decay width. Yes, h cross upon T. Decay width is equal to h cross upon T. So time is inversely proportional to decay width. Now you have a proton and neutron. They are fermion, right? It cannot be boson. So which basically govern that fermion property of proton or neutron? How will confirm that proton and neutron can be fermion, but they will never be boson? Sir, they have antisymmetric wave function. And why? And the spin of both of these particles is half. Okay. How will understand that whether this wave function is antisymmetric or not? Sir, how we understand? Sir, suppose we have two particles A and B in the energy levels 1 and 2. Then the antisymmetric wave function will come out to be there is a normalization factor of 1 upon under root 2. And then one particle in, suppose A particle in first state and second particle in B state. Then there is minus sign comes, which governs the antisymmetric property. Okay. When we exchange two particles. But in bosonic system, when we exchange two particles, the minus sign doesn't come, the positive sign comes. So I'm not talking about two protons or two neutrons here. If that two protons will decide that whether it is antisymmetric or symmetric, right? Yes. Two particle system. Suppose you have a single proton. How will confirm that this will be fermion? It will never be boson. Single proton fermion. So I'm talking about single proton. So by looking at spin. Spin. That's which actually governing that spin? Sir, who is governing that spin? Magnet spin which governs. Sir, who is governing that spin? It's composition, right? It's quark composition. Exactly. It's quark composition. If you see, it has three quark, up, down, right? UUD. And that composition, that quark composition will tell. You have to take vector sum. If you take vector sum of all spin of quark, that will get half integral spin. You'll never get integral spin. And that basically confirming that proton or neutron,
they will be fermion. They will never be boson, right? Yes. Now, can you please describe the molar scattering? Can you draw the diagram of Feynman diagram of molar scattering? Sir, I actually don't know that. No, when you will tell that you are interested in high energy physics, now you have to. They will definitely go to Feynman diagram. Feynman diagram and calculate that scattering amplitude. Sir, I haven't studied it. Okay. Now, last question is: you have a nuclear force that is spin dependent, right? Nuclear Yes. force is spin dependent. Can you describe that? Why it is called spin dependent? Why nuclear force is spin How it is dependent? called spin dependent? Why? So nuclear force is spin dependent. Sir, because it's different for. Now see, you have a two spin. You have two nucleons having spin parallel. Yes, sir. Spin can act as a magnet, as a spin magnetic moment, right? Sir, nuclear forces depends upon spin due to the coupling of the spin. That's what I'm saying. You see, you have two nucleons. If they have same spin, it means that two magnets are aligning parallel. Yes, So sir. it means they will repel to each other. So they will go far away from each other. And we see Yes. that nuclear potential depends upon distance between nucleons, or nuclear force depends upon distance between nucleons. तो जब आपका दो न्यूक्लियस का स्पिन पैरेलल है, दोनों दूर चला जाएगा ड्यू टू सेम पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट, तो उनके लिए फोर्स कम हो जाएगा. अब जो दोनों समझ में लो स्पिन एंटी पैरेलल है, सो देयर पोलैरिटी इज ऑपोजिट, मैग्नेट इज हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटी, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा. So nuclear force will be increased because nuclear force depends upon distance between two nucleons. Yes. Okay, all the best. Please practice few Feynman diagram. Sir, from which book I refer? Feynman diagram, Griffiths. Feynman diagram. I have a lecture. I have summarized. You can go through. That is available in our on YouTube channel. On our YouTube channel. You will get that. Waveguides. Okay. You subscribe our channel. Mukaddar sir's lecture is there, and you have been added in our interview WhatsApp. Yes, sir. So there we will put the playlist. Okay. Okay, sir. So lectures are present there. So it will be difficult because you will be reading first time. So it will be very effective for you if you see Mukaddar sir's lectures on this Feynman diagram. Okay, sir. Okay. Okay, Prajwal, all the best. Thank you, sir. Okay, Prajwal. So can you have you studied waveguide in electromagnetic theory? Yes, sir. Okay. Whatever you know, just start to tell. Sir, What is waveguide? What is it basically? Sir, waveguides are basically hollow metallic pipe through which EM waves can propagate. Through EM waves propagate. Okay. So what do you mean by cutoff frequency? Sir, this is the minimum or maximum? Minimum or maximum? Give the definition. Cutoff frequency. Sir, there should be some minimum frequency above which EM wave should propagate. Are you sure? Acha, what is transverse electric and transverse magnetic modes? Sir, magnetic mode perpendicular to the direction of propagation. Magnetic field perpendicular to the direction of propagation. What is transverse electric mode? Transverse, TE and TM. TE and TM. And TEM. Sir, 3 different things are there, na? Yes. So just can you elaborate a little bit? TE is transverse electric pipe. Okay, sir, you continue. Okay, Prajwal, can you give us a name or one example of waveguide?
if you know. One example of, sir, optical fiber. Optical fiber. What is it? What is optical fiber? Sir, optical fiber basically एक core होती है अंदर, और sir then there is a cladding. Okay. Sir, it will act as a hollow waveguide because the core has refractive index n1 and cladding has refractive index n2. The refractive index of cladding should be more than the core, so that TIR can occur and wave can propagate through it. TIR can occur. What is TIR? So total internal reflection. Okay. So I have one question from Waveguide again. Can you write expression for the velocity means energy okay? Can you write the expression for the group velocity? I'm not going to the very deep definition of group velocity. So can you write expression for the group velocity of waveguide? One minus omega m over omega naught का whole square. Just write it over there on your notebook. दरवाजा हो सकते तो बंद कर दो बहुत. I'm not sure whether it is comes out to be numerator or denominator. The 1 minus omega m upon omega naught का whole square factor. Yeah, that's the main thing, na, between phase velocity and group velocity, whether it is numerator or denominator. Okay, one last question from my side. Have you studied angular momentum in quantum mechanics? Angular momentum algebra? Yes, sir. Okay, just write 3 cross 3 matrix for L plus. L plus. L plus. Yeah. Lx is equal to L plus. So no, I don't able to derive it. For Lx or Ly, if you remember. For Ly is 0 minus 1 0 0 h cut square 0 0 1 0. So it is 0 minus 1 1 1 0 0 0 1 0. Can you please show? It is not actually visible. Some put it. No, it's not visible. Keep it back some. Keep it some distance. Keep it at some distance from camera. Come here. Come. More. Actually, it's not visible. I don't know why. नहीं So नहीं just मैं कह रहा था कि अभी WhatsApp करवा लेना फिर उस पे रिप्लाई कर देना, ठीक है? But I think the matrix have you conveyed is incorrect. Is any means outside any h cut term or something is there or without it? H cut square. How can it be h cut square? Then what will be in the L square? Sir, you have asked for Lx square. No. I asked for Ly. Okay, no issue, Prajwal. Alok sir. I was saying that वो WhatsApp करा लेना. ठीक है सर. Or अभी. Ly. Yeah, Ly. Okay, sir, I am sending it. Okay. Alok sir, please continue if you want to ask something. नहीं मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा तैयारी में अभी कमी है. आपको क्या लग रहा है? हाँ मतलब एक बेसिक थिंग्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए. तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है. मतलब चीजें थोड़ी हेजी वे में पता है, ठीक है? आपको नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, बट इंटरव्यू बस पॉइंट थोड़ा सा कंफर्म करके जैसे मतलब क्या है ना, थोड़ा सा क्लोज जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वो मैटर कर जाता है फिर कि भाई
चीजें पता है बट क्लैरिटी की कमी है, तो थोड़ा क्लैरिटी लेकर आनी है इन माय व्यू। ओके सर। ठीक है, ओके प्रज्वल, गुड लक। कोई बात नहीं, वी विल टॉक अगेन। अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। ओके सर। So the next candidate is Mr. Saurabh. एक बार पहले उनको ले लेना जो फर्स्ट टाइम। हाँ सर, I have list. That's according to the that list I am asking. ठीक है, Yeah, उसके बाद Saurabh. फिर सेकंड राउंड में। Yeah. Saurabh, are you there? Mr. Saurabh. I don't think he is there. Okay, Sukalyan. Sukalyan Dev. Yeah, hi Sukalyan. आई थिंक सुकन्या हुई थी, तो एक बार अपडेट ये ले लो कि क्या पढ़ा तब से इन्होंने, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Sir, So can I leave? according to our suggestion, what you have read further and what you have included in your studies? Sir, as I mentioned on my previous. Yes, Prajwal. 1 minute, Sukalyan. Yes, Prajwal. What is you? What are you you're saying? Can I leave the meeting? Yeah, yeah. Okay. Okay. Yeah, Sukalyan, please. So basically, I just go through some books and the question that I have not been but getting on the last interview, I go through that. So my preference has been the quantum mechanics, mathematical physics, and that's it, and the classical mechanics. Okay. And theoretical quantum mechanics. So you have read few topics from the books? A little bit. Little bit. Okay. Because last time we had interview, we know that you know things. The only suggestion was to go through at least 10-15 topics from the books. So my suggestion will be that you make a list of 10 topics, and because we have done your interview, we know everything. Right. Just improve yourself by, so you should have come with कि sir मैंने 10 topic ये book से पढ़े. That was our suggestion. Okay. The last thing I want to ask, can I ask questions in the interview? Yes. From your side you can ask. Okay. So next, if any interview planning in the Sunday, then I have to make the list and I will confirm that this. You just make a list. That will help you a lot. That will grow your confidence. If you read everything from the scratch, make notes of at least 10 topics. Good. Actually, you can make a list, and if any query you have, then you can send in the group also. You can send it group also, and the first thing is read it from the book. You will understand. Yes, sir. Because you are a good student, you know and things. This is for everyone, every candidate. If you have any doubt, you can send your query in the group, and you will get the answer for sure. And okay? don't to everybody, don't take this suggestion lightly, that you have to, at the end of the day, before going into the interviews, from whatever topics you like or whatever are the main important topics which are asked in the interviews, you should go through from the books, make critical notes out of it, revise that. That will boost your confidence. Actually, next week I have an interview from IIT Bombay. Okay, so if one session in Sunday, I know you people are very busy. Okay, but if one session can possible, then that can boost up my confidence. Okay, so I definitely make a list of 10 and 15. Okay, you can do one thing. Just make a list. Just make a list and send it to the group that this topic you have studied. Okay, and if it is possible, then we can क्यों आलोक सर, we can organize a session. अरे एक बच्चे का है तो ऐसे ही ले लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ले लेंगे तुरंत, कोई प्रॉब्लम नहीं. No issue. ठीक है. Okay, Sukalyan. So yeah, Dhananjay, Mr. Dhananjay Mishra. आई थिंक धनंजय का ही लास्ट टाइम लिया था हम लोगों ने इंटरव्यू. धनंजय का हुआ था सर. हाँ, इसमें आप कोई नया बच्चा है? ये श्रीनिवास जी and श्रीनिवास. Ashok Srivastava was also there at the last candidate अशोक was का there. भी लिया था.
श्रीनिवास को एक बार ऐड कर लो, उसके बाद बचे हुए लोग। श्रीनिवास, please can you on your video? Sir, 1 minute. I am in traveling, sir. Sorry. अच्छा, okay. Just listening. Okay. No issue. So Dhananjay, are you there? Or Ashok Srivastava, are you there? Just 2 candidate has been left only. Yes. Dhananjay, I guess Dhananjay is not there. So Ashok Srivastava. Yeah, please on your video. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Give your brief introduction. Hi, Ashok. Give your introduction. Sir, hi, I am Ashok Kumar Srivastava. I have done my MSc and BSc same college, Siddharth University, Pravegaa, Siddharth Nagar, and I have aspirant of Pravegaa education. That's it. I am aspirant of Pravegaa education. अशोक, इंटरव्यूअर जानने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपने सेल्फ स्टडी किया है या कहीं और से किया है। सो अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपके इंटरव्यू में तुम्हें बताना है कि तुम एमएससी कहाँ से हो, ठीक है? एमएससी कहाँ से किया है तुमने और तुमने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है? सर, आई हैव क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन। उसमें तुमने तैयारी उसकी कैसे की है, इस बात का कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। यस। सो लास्ट टाइम हमने जो आपका इंटरव्यू लिया था उसके बाद आपने क्या क्या पढ़ाई किया, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा आपने? सर, हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू जब दिया था तो हमारा एरिया डिसाइड नहीं था कि हमको किस ब्रांच में जाना है, तो हमने अब कंफर्म कर लिया हमको पार्टिकल फिजिक्स में और उसमें एस्ट्रोफिजिक्स के ब्रांच में जाना है। तो हमने पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स को मैंने पढ़ाई की, मतलब पढ़ा है। अच्छा, तो ठीक है, फिर मुकद्दर सर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरे लिए बस आप जल्दी से पॉलीस्पिन मैट्रिक्स लिख दीजिए तीनों, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। ओके, फिर मुकद्दर सर इंटरव्यू लेंगे। सर, सिग्मा एक्स 0 1 1 0, सिग्मा वाई 0 माइनस आई 0 और सिग्मा जेड -1 +1। सर, +1 -1 सिग्मा जेड। सर, 2 ही कंपोनेंट है सिग्मा जेड में। 2 क्रॉस 2 रिपीट करिएगा। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होता है। हाँ, तो सिग्मा जेड आपका फिर से रिपीट करिए, क्या लिखा है आपने? सिग्मा जेड 1 0 0 -1। ओके। सो मुकद्दर सर। यस कुणाल। और सर h कट बाय 2 सर h कट बाय 2 यस। नो सर h कट। कोई बात नहीं मुकद्दर सर प्लीज। नो सर h कट बाय 2 नहीं रहेगा। कोई बात नहीं। हाँ अशोक। यस सर। हाय सर। Can you, yes, Ashok, can you please derive that charm quantum number for charm quark? It is +1. Can you please derive that? Charm quantum number +1. For charm quark, it is it is +1. But for bottom quark, bottom quantum number is -1. Can you please derive, or can you please give that clue how it is coming actually? The German is no formula. There's no formula. Yes. Is it? Q upon E equal to I3 plus B baryon numbers plus strangeness plus bottom plus tau plus char upon 2, sir. From this formula, can you please derive that charm quantum number is actually +1? Charm quantum number is +1. Can you please derive that? For which particles, sir? For charm quark. Charm quark. Okay, please.
Sir, can I take a little more time, sir? You can take. Oops. Okay, when you're taking the charm quark, so Yes. Q is how much? Charge कितना ले रहे हो आप? Sir, charge ले रहा हूँ मैं -1/3. हाँ, चार्म का -1/3 होती है. चार्म का Yes. चार्ज होते हैं 2/3, लेफ्ट हैंड साइड में 2/3. I3 कितना होता है? 0 होता है. I3 बैरियर 0. नंबर कितना? बैरियर नंबर कितना है? बैरियर नंबर सर 0. 0 होता है. क्वार्क का बैरियर नंबर 0 होता है. 1/3 होता है ना? 1/3 सर. हाँ, तो वहां से मिल जाएगा. बाकी सारे क्वांटम नंबर 0 कर देना. ठीक है. नाउ वी हैव a proton and neutron, है ना? If you see that neutron is bit heavier as compared to proton, है ना? Yes. क्यों होता है? Neutron is heavier than protons. हाँ, क्यों होता है? Because neutron is unstable than proton, and when neutron No. Because of it is neutron is heavier as compared to proton. That's why it is unstable. What is the reason behind that neutron is heavier as compared to proton? क्या reason है इसके पीछे? Due to meson exchange. आप कितना हेवी होंगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपका कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किससे बने हुए हो, राइट? Yes sir, because quark composition of neutron is आपके पास न्यूट्रॉन के पास 2 डाउन क्वार्क है, 1 अप क्वार्क है. प्रोटॉन के पास क्या है? 2 अप क्वार्क है, 1 डाउन क्वार्क है. डाउन quark is heavier than up quark. Exactly. Neutron is much heavier than. Can you please describe that Bhabha scattering? Yes sir. Can you please describe Bhabha scattering? Bhabha scattering is electron positron scattering. Can you write that Feynman diagram? Feynman diagram. Yes sir. Can I? Sir. Yes. Can you show? I can see. Can you show? Electron, positron. Okay. Good. What is the exchange particle here? Exchange particle is photon. Photon. Yes. Okay. So what type of interaction it is actually? This is pair annihilation and pair. No. There's the interaction is right. Exchange particle is photon. Then what will be called this interaction? EM interaction, sir. Exactly. Okay. Now can you please tell me that spin orbit coupling? Yes. What is spin orbit coupling actually? Sir, actually. Okay, no problem. Now I have suppose you have a spin orbit coupling. Spin orbit splitting होता है ना? Yes, spin और ऑर्बिट जो जैसे कोई अगर पार्टिकल है वो स्पिन में अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो मतलब प्रोजेक्शन बनता है वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहलाता है. What is the reason behind spin orbit coupling? Tell me. क्या रीजन है? क्या मैकेनिज्म है? कौन सा इंटरेक्शन होता है? यस सर. कौन सा इंटरेक्शन होता है कपलिंग के पीछे? The magnetic interaction, right? Because of magnetic. Okay, now we have a spin orbit splitting in electron, in atomic case, and you have a spin orbit splitting in nucleus also. न्यूक्लियस का भी स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग होता है, सेल मॉडल में आपने पढ़ा होगा. यस सर. और एटॉमिक में भी होता है स्प्लिटिंग, ठीक है ना? आपने पढ़ा होगा. यस सर. कौन सा स्प्लिटिंग ज्यादा होगा? व्हिच वन विल बी स्ट्रॉन्गर? Which splitting will be stronger?
एटॉमिक स्प्लिटिंग इज, मतलब जो एटॉमिक स्प्लिटिंग होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर स्प्लिटिंग। Very good. How will guarantee that? एक्चुअली में जो स्प्लिटिंग एनर्जी आती है स्पिन ऑर्बिट इन न्यूक्लियस एंड स्पिन ऑर्बिट इन इसमें, वो स्पिन ऑर्बिट एटॉमिक। सर मेरा ये लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं उसको चार्जिंग पे लगा सकता हूँ सर? हाँ हाँ, आप लगा लीजिए सर। इसलिए उसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी आता है ज्यादा होता है इस एटॉमिक वाले में, और न्यूक्लियर वाले में थोड़ा कम होता है। बिल लगा लो। That's on term F of R, that is called strength of coupling. Yes sir. So on term F of R, if you remember, F in spin orbit Hamiltonian, there is a term F of R, right? Yes sir. F of R L dot S. F is called strength of coupling. Yes sir. And strength of coupling in electronic case, that depends upon inversely proportional to mass of electron. और न्यूक्लियर के केस में क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? That will be inversely proportional to mass of nucleon. So strength of coupling is actually strong in electronic case or atomic case. It is actually weak for nuclear case because of mass of nucleon. Thank you. Yes. Okay. All the best, Ashok. ओके चलो, इस बार अशोक तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा लगा। हाँ सर, मैं भी यही कहने वाला था। थैंक यू। अशोक, किन्हीं दो हाइपरॉन्स के नाम बता सकते हो? ओमेगा हाइपरॉन्स और सिग्मा, ओमेगा सिग्मा प्लस प्लस। सिग्मा की आइसो स्पिन कितनी होती है? किसकी सर? सिग्मा की आइसो स्पिन सर 3/2। 3/2 इसकी सिग्मा सर जी। सिग्मा और लैम्डा में सर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सिग्मा और लैम्डा में कंफ्यूजन रहता है? कंफ्यूजन क्यों होता है? मैंने तो सिखाया ना आप लोगों को कैसे आइसो स्पिन निकालते हैं। बहुत ही अलग सिग्मा और लैम्डा एक दूसरे से। अगर आपको याद है, मैंने मैकेनिज्म सिखाया ना कि कैसे निकालते, क्वांटम नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। सर किसका पूछे हैं, लैम्डा का या सिग्मा का? नहीं, आप सिग्मा का बता रहे हैं, मैंने तो हाइपरॉन्स पूछा है। सिग्मा के बारे में बताइए आप। चलिए सिग्मा के बारे में बताइए। सिग्मा 3 होता है। क्या 3 होता है इसका? सर स्टेट 3 स्टेट होता है। 3 स्टेट से हम इसका मतलब आइसो स्पिन निकाल। हाँ, तो 3 स्टेट होता है, तो इसकी आइसो स्पिन इसकी कितनी हुई? 3i + 1 = 3, i = 1 हो सर। नहीं, बोला तो आपने सही है, बट आपने हाँ। शायद कुछ गलत लिखा है। एक बार फिर से जरा बताइए कि आइसो स्पिन आपने इसकी कैसे निकाली है? 3i + 1 = 3 आपने लिखा है। 2i + 1 = 3 सर। 2i + 1 = 3। Yes, ओके। sir. And I तो equal अगर हम सिग्मा माइनस की बात करें तो इसका थर्ड कंपोनेंट आइसो स्पिन का कितना होगा? अगर सिग्मा माइनस की हम बात करें, सिग्मा माइनस सर हमारा होगा -1 1 0 -1 -i2 + i। ओके। लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इफ Yes, sir. आई रिमेंबर, कि क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट टर्म बताइए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। Yes sir, याद है? LS yes sir। हाँ, तो आज मुझे आप एल्यूमिनियम का बता दीजिए लिख के जरा। एल्यूमिनियम का ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। Yes, okay sir। सर 2p 3/2। ग्राउंड स्टेट टर्म इसका क्या होगा? 2p 3/2। 2p 3/2 सर।
कैसे आपने डिसाइड किया इसका ग्राउंड स्टेट टर्म? सर एल टू एस एल का पावर 2s+1 अपॉन जे, मतलब सफिक्स में जे। नहीं नहीं, 2p3/2 के साथ आपको कोई और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिली है एल्यूमिनियम में, कि ऐसे 2p3/2 ही मिला है? सर ग्राउंड स्टेट टर्म तो केवल इंडिविजुअल वन। नहीं 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 नहीं, मैं ग्राउंड स्टेट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने टर्म्स आपको मिले एल्यूमिनियम के लिए, ये आप मुझे बताओ। कितने टर्म्स मिले हैं भाई? कुछ टर्म्स मिले होंगे जिसमें से आपने डिसाइड किया कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट नहीं। तो आपको ऐसे कितने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिले हैं एल्यूमिनियम के लिए? सर इसकी ग्राउंड स्टेट इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म होता है निकालने के लिए सर एक फार्मूला होता है, L2s+1 अपॉन जे, जे वैल्यू, और बीच में यल होता है। बट उसके लिए LSJ भी तो आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। आप मुझे इस बताइए, आपने हाँ, क्या इसका स्टार्टिंग कहाँ से किया आपने? L इलेक्ट्रॉन हमारा इसके लिए हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया सर। बताइए जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है। 3p1 3p1 में सर, यस सर, हम्म, p के लिए L की वैल्यू हमारी 1 होगी, ठीक S है। की वैल्यू हाफ होगी सर, S की ओके, वैल्यू हाफ। तो S की एक्चुअली वैल्यू, में एक मिनट, S की वैल्यू हाफ हुई तो नंबर ऑफ क्वाड्रेट 2 हो गए, नंबर ऑफ क्वाड्रेट 2 हो गए। L की वैल्यू 1 है तो वहां से आपने डिफाइन कर दिया कि ये p स्टेट में रहेगा, तो 2p तो आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बात आती है J की। J के लिए क्या करें? जे के लिए हम सर अगर ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए अगर हमारा L वैल्यू जो है ग्रेटर देन S है तो हमारा L+S होता है। अगर L की वैल्यू हमारी लेस देन S है तो क्या नाम है उसके लिए L-S होता है। देखिए, ये कौन सी शॉर्ट ट्रिक आप मुझे बता रहे हैं मुझे नहीं पता, बट जो बेसिक फंडामेंटल है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपने L की वैल्यू 1 फाइंड आउट किया, S की वैल्यू हाफ फाइंड आउट किया, हाँ ठीक है। सर, तो जो हाँ सर, J की वैल्यू होती है वो आपने पढ़ा होगा L-S से L+S के बीच में होती है। हाँ सर, तो L-S जब आप करोगे तो आपका J की वैल्यू 1/2 आएगा, हाँ सर, और जब L+S करोगे तो J की वैल्यू 3/2 आएगा। यस सर। तो मीन्स आपको यहाँ पे दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिले। मैं ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ। ओ हाँ, पहला मिलेगा 2p हाफ, 3/2, दूसरा मिलेगा 2p 3/2। हाँ सर, अंडरस्टूड? यस। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ग्राउंड स्टेट है कौन सा नहीं। तो इसके लिए जो बेसिक रूल है वो ये कहता है कि हमें देखना है कि शेल जो है वो हमारा लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है, ठीक है। यस, तो अगर यस, आपने शेल को देखो तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। 3 शेल है ना, p ऑर्बिटल है, तो 3 शेल होंगे, हाँ सर, उसमें हाँ सिर्फ सर, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये लेस क्या देन हुआ, हाफ, फील्ड हुआ या लेस देन हाफ लेस फील्ड देन हुआ? लेस तो देन लेस हाफ, देन फील्ड होती है तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है J की, हम उसको ग्राउंड स्टेट असाइन करते ओके सर। हैं, ठीक है। तो आपका जो टर्म होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगा ग्राउंड स्टेट, वो होगा 2p हाफ, नॉट 2p 3/2, ओके ठीक है। सॉरी सर। तो आप थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान दीजिए। पहले के कंपैरिजन में आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपकी रही है, मतलब दिख रहा है कि आपने काफी अच्छा मेहनत किया हुआ है अपने काम, ठीक है। सो मुकद्दर सर, आलोक सर, एनी फीडबैक फॉर हिम? Yeah, I agree with you completely. हम्म, तो ठीक है अशोक, गुड लक और अच्छे से और तैयारी करो, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, धनंजय, मिस्टर धनंजय। Good noon, sir. या धनंजय, गुड नून। स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। Sir, my name is Dhananjay Mishra. I am from Rajasthan. I completed my MSc Physics from University of Rajasthan. University of Rajasthan. So Yes, which exam you have qualified? I think you have taken an interview last time, right? yes, sir. Sir, हाँ, CSIR GRF 1016 and GATE exam 53 rank and BRC 3 times and IUS scientific officer written. okay, qualification is good. So means which topic have you covered after your last interview? Sir, atomic physics पढ़ा है Atomic and physics, quantum. Yes, sir. atomic physics पढ़ा है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा है मीन्स आपने मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी पढ़ा होगा। सर अभी वो स्किप कर दिया था, मतलब अभी मॉलिक्यूलर, मतलब इतना टाइम नहीं मिला। नहीं मतलब एटॉमिक किया था, अभी कंप्लीट कर रहा था इनोसो कल तक। अच्छा अच्छा,
यस सर, Okay. क्वांटम भी प्रिपेयर। क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ा है आपने? हाँ हाँ, क्वांटम न्यूक्लियर सॉलिड वो ठीक है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं मुझे? यस सर। क्या मुझे लिख के बता सकते हैं कुछ, क्या होता है ये, क्या जरूरत पड़ती है इसकी, जो भी आपको पता उसके बारे में, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ओके। सर दिखाएं। एक्चुअली ये आपने प्रॉपर्टी मुझे बता दी है। यस सर। हाँ, क्या होता है ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज कहाँ पे करते हैं? सर प्रोजेक्शन ऑपरेटर एक तरीके से मतलब हमारी एक स्टेट किसी स्टेट का किसी दूसरी स्टेट के करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन लेने के काम आता है। जैसे मतलब स्पिन अप स्टेट है उसको स्पिन डाउन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्लियर मैं कर वही पाएंगे पूछ सर? रहा हूँ, मैं उसी चीज को पूछ रहा हूँ। आप मुझे क्या लिख के बता सकते हो क्या होता है वो, कैसे आप करते हो? आपको एक से दूसरा आइगन स्टेट में जाना है, आप कैसे करोगे? मुझे बता सकते हो आप कुछ? ये तो आपने ओके सर। प्रॉपर्टी लिखी है कि P इक्वल टू पी स्क्वायर। यस सर। सर ये लैडर ऑपरेटर LM स्टेट को LM प्लस कन्वर्ट कर देते ये क्या है? L प्लस कहाँ से आ गया? हैं। आप सर वो एंगुलर एक स्टेट को दूसरी। मैं सर सिंपल ज्यादा मैं उसका एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता क्या है, कैसे आप यूज करते हो प्रोजेक्शन ऑपरेटर को? ठीक है, अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल के बारे में आपने पढ़ा है? यस सर। थोड़ा बताना उसके बारे में, क्या होता है, उसके जो बाउंड स्टेट होते हैं कितने होते हैं, जो भी आपको पता हो उसके बारे में। ओके सर। सर अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि हम पोटेंशियल टाइप से डिफाइन करते हैं -A डेल्टा एक्स। ए उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। अब क्या होता है कि जब पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन 0 होती है तब तो वो क्या बाउंड स्टेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन जब पार्टिकल की एनर्जी लेस देन 0 होगी तो वो क्या बोलते हैं, वो एक तरीके से बाउंड हो जाएगा पार्टिकल। कितने नंबर ऑफ बाउंड स्टेट होते हैं इसमें? सर इसमें 1 होता है सर। सिर्फ एक होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है? सर एक या क्यों, ऐसा क्यों, क्या रिलेशन है इसका? मतलब क्यों, आपने क्यों कहा कि एक ही होगा? सर जब मतलब कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप पहले इसकी एक इसका बाउंड स्टेट मिलती है। आप इसका पहले वेव फंक्शन मुझे लिख के बता दीजिए, अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल का वेव ओके। फंक्शन। mv नॉट बाई h का स्क्वायर e to the यस power सर। minus x। क्या बोल रहे हो सर? देख रहा हूँ मैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू आई गेस, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने जो थ्योरी मुझे बताई है वो तो सही है, ठीक है, एक यस एनर्जी सर। आइगन वैल्यू पॉसिबल होगी इसलिए एक बाउंड स्टेट होगा, ठीक है, बट वेव फंक्शन में मुझे कुछ इशू लग रहा है, आप इसको देख लेना, मुझे पता है क्या इशू है बट आप देख लेना एक बार, ठीक है। ओके। अच्छा, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन आपने पढ़ा है स्कैटरिंग थ्योरी? यस सर। क्या उसकी नेसेसिटी कंडीशन है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की? सर पोटेंशियल वीक होना चाहिए और जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होनी चाहिए। हाई होनी चाहिए। यस सर। और भी कोई और भी
और सर इस वजह से क्या होगा कि जब हमारी कोई वेव इंसिडेंट होगी वीक पोटेंशियल से, तो उसके दो पार्ट मिलेंगे। एक तो मतलब जो इंसिडेंट वेव उसी टाइप का मिल जाएगा, और दूसरा स्फेरिकली स्कैटर्ड पार्ट मिलेगा। अब बोर्न अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन ये है कि जो इंटीग्रेट के अंदर जो हम एक वेव फंक्शन एक्स्ट्रा यूज लेते हैं, उसकी वैल्यू इंसिडेंट वेव फंक्शन के इक्वल लेते हैं हम। psi x equals to phi of x, which is equals to e to the power iota kx। मतलब प्लेन वेव ही मानते हैं उसको। ओके फाइन। अभी आपने कहा कि आपने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ी है, राइट? यस सर। क्या आप मुझे मैग्नीशियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बता सकते हो जल्दी से? मैग्नीशियम का? जी। ओके सर, 0 आएगा। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ रहा है इसका? सर इसका आ रहा है 1s0। 1s0? यस सर। Okay, so magnetic moment will be 0 because value of J is 0. Yes. आपका इंटरव्यू लास्ट टाइम लिया जा चुका है। आलोक सर, if you want to ask something. लास्ट टाइम इंटरव्यू लिया था, ठीक है इनका। मुकद्दर सर, if you want to ask. One question I'll ask. Yeah. So Dhananjay, there's a Hund's rule, that is higher the multiplicity, lower is the term, right? To arrange that spectroscopic term. Yes, What is the sir. meaning of that? Higher the multiplicity, lower is the term. What is the meaning of that? ओके सर। सर जो क्या बोलते हैं कि हम मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 है, ये अगर लोअर होगी तो हमें एनर्जी लो मिलेगी। इसका रीजन, हाँ, एक सेकंड सर। ओके सर। सपोज मान लो आपके पास यस सर, सर मैं समझ गया, मैं बताता हूँ सर। जो इस क्या बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 होगी, तो इस टाइप से हमारे पास s की दो वैल्यू मिल सकती है, s = 0 और s = 1। अब s = 0 इनिशियलाइज कर रही है, इसका रीजन ये है कि इसमें ls कपलिंग में ss वो स्पिन स्पिन कोरिलेशन होगा। अब स्पिन स्पिन कोरिलेशन के अकॉर्डिंग जब हमारी दोनों के दोनों स्पिन एंटी पैरेलल होगी, तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी ड्यू टू द एक्सचेंज फोर्स, और जब वो पैरेलल होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। अब जब एक दूसरे को कब जब एंटी पैरेलल होगी तब सर, तो जब पैरेलल है रिपेल करेगा, राइट? एंटी पैरेलल अट्रैक्ट करेगा ना सर? एंटी पैरेलल, हाँ यस सर। क्यों? हाँ यस सर। सर जो वेव फंक्शन है ना, टोटल वेव फंक्शन, वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब एंटी सिमेट्रिक होने के लिए जब s = 0 है, तो s = 0 सिंगलेट स्टेट के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका स्पिन वेव फंक्शन हो गया एंटी सिमेट्रिक। तो इसके लिए जो स्पेटिकल वेव फंक्शन होना चाहिए वो सिमेट्रिक बनना चाहिए। अब सिमेट्रिक के अंदर पॉजिटिव साइन आएगा, तो जब हम दोनों के दोनों स्टेट को क्लॉज एक दूसरे के क्लॉज टुगेदर मानेंगे, तो हमारे पास क्या बोलते हैं नेगेटिव साइन है नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हाई मिल जाएगी। जब s = 1 होगा हमारे पास, तो s = 1 के करस्पॉन्डिंग हमें ट्रिपलेट स्टेट मिलेगी जो कि सिमेट्रिक होगी। अब ये सिमेट्रिक है तो टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होने के लिए स्पेटिकल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक वो तब होगा जब बीच में माइनस साइन आएगा। अब जब दोनों स्टेट को हम क्लॉज टुगेदर मानेंगे, तो एक स्टेट दूसरी स्टेट के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी, तो दोनों कैंसिल आउट होकर हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 दे देगी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपका गारंटी देगा कोई एनर्जी? देखो एक स्टेट का आप कैसे अरेंज करोगे? एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे ना, कि कौन सा लोअर होगा कौन सा हायर होगा। तो इज देयर एनी गारंटी दैट लोअर प्रोबेबिलिटी मींस हायर एनर्जी और हायर प्रोबेबिलिटी मींस लोअर एनर्जी? प्रोबेबिलिटी से एनर्जी का कोई रिलेशन है? सर प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन वो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, उससे तो लगा सकते हैं। हाँ? कि जब दोनों मतलब जैसे ही मतलब जब दूर जाने पर प्रोबेबिलिटी मिल रही है हमें, तो मतलब वो कंडीशन हमें, तो उस कंडीशन को हम देख लेंगे कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन ज्यादा है, तो उस वजह से पोटेंशियल सेपरेशन ज्यादा से क्या होगा? हाँ, दोनों जब सपोज मान लो दोनों का सेपरेशन ज्यादा है, हाँ, तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? हाँ, तो सर पोटेंशियल एनर्जी टर्म की प्रोपोर्शनलिटी होती है 1/r²। तो जब सेपरेशन ज्यादा हो गया तो पोटेंशियल की वैल्यू कम आ जाएगी हमारे पास। एग्जैक्टली एनर्जी कम कंट्रीब्यूशन। हाँ देखो, ये सेपरेशन होने का रीजन मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका दो स्पिन है, दोनों मैग्नेट है, ठीक है,
अब दोनों मैग्नेट जब अलाइन है, मतलब दोनों का पोलैरिटी सेम पोजीशन पे है, तो सेम पोलैरिटी तो रिपील करेगा ना। दोनों जब दोनों पैरेलल है तो रिपील होकर दूर चला जाएगा मैग्नेटिक रिपल्शन के कारण। अब जैसे दूर चला गया तो कूलॉम इंटरेक्शन जो एनर्जी है ना वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो ओके धनंजय, ये प्रिपरेशन जैसा कि आपने बताया था एटॉमिक फिजिक्स हमने पढ़ा है तो आपको है उसकी नॉलेज है, तो ऐसे ही आप आगे फर्दर आप स्टडी करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एंड एनीवन लेफ्ट जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ हो, कोई है क्या ऐसा? आई गेस हो गया सबका। All done, I think. Yeah. Okay. Then Okay. Thank you all. thank you everyone. Thank you.